आपका स्वागत है हमारे चैनल में लर्न टुडे एंड लिव टुमारो। सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 of company bill. Minimum and maximum director. Direct board of director is the second largest body of the company after shareholders who manage the company. Minimum director means every company shall have a board of directors consisting of individual as directors and shall have a minimum number of 3 directors in case of public company, 2 directors in case of private company, and 1 director in case of one-person company. Maximum it may be 15 directors. If you want to more than 15 directors in a company, then you have to pass special regulation. Exemption notification for two companies, Section 8 not for profit company and government company can have more than 15 directors without passing SR, but subject to has not committed a default in filing of financial statement or annual return. If any company not follow these provisions, then punishment under section 172 will apply. It will discuss later on. For example, suppose article of association mention that 12 directors and company appoint more than 12 directors like 13 directors. Then you have to first pass SR to alter its article of association to increase up to 14 directors or 13 directors or maybe. Thereafter you have to pass SR to appoint a new director. This is the procedure. Another example. Suppose company have 15 directors and article of association mention that there is 15 directors in the company. Then first you have to alter the article of association by passing SR and then appoint another director by passing SR. SR means special resolution. This is 149 subsection 1. 149 subsection 1 149 subsection 1 वुमेन डायरेक्टर. वुमेन डायरेक्टर इसका एक सिंपल एग्जांपल है. फैमिली को चलाने के लिए एक लेडी की जरूरत होती है, इसलिए फैमिली को लिस्टेड कंपनी के हिसाब से समझिए. तो लिस्टेड कंपनी जो पब्लिक है वहाँ पे एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर इज मैंडेटरी. और इन केस ऑफ अदर कंपनी लाइक पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल greater than equal to 100 crore or turnover greater than equal to 300 crore. Both figures as per the latest audited financial statement. अब इस फिगर को याद कैसे रखना है? जैसे हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड 3 है तो 300 करोड़ टर्नओवर के हिसाब से, और एक हस्बैंड और एक फीमेल होता है इसके लिए 100 करोड़. एक लिख लिया होता है तो पेड अप शेयर कैपिटल इज 100 करोड़ एंड टर्नओवर इज 300 करोड़. अगर कोई न्यूली कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो within a 6 months of its incorporation to comply this provision needs to appoint at least one woman director. इसमें एक केस है जैसे कि इंटरमीडिएट वैकेंसी. वैकेंसी अराइजिंग बिटवीन डेट्स ऑफ टू जनरल मीटिंग. इट्स अ इंटरमीडिएट वैकेंसी. Intermittent vacancy of a woman director shall be filled up by the board within later on. Means जब भी कभी इंटरमीडिएट वैकेंसी होती है वुमेन डायरेक्टर तो उसे फिल करने के लिए क्या कंडीशन है और कितने टाइम फ्रेम में उसे फिल करना है. इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months फ्रॉम द सच मीटिंग, सॉरी 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी whichever is later. For example, suppose नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग 30 सितंबर को है और वुमेन का जो इंटरमीडिएट वैकेंसी है वो हुआ है जुलाई मंथ का 30 जुलाई का, और 3 months काउंट होता है अगस्त सितंबर अक्टूबर.
whichever is later October, then you have a time to fill up by the board within later or